what should be their forward line generally speaking? Forward line, given the current form, uh, Hoyland, uh, it should be Hoyland playing up top with Bruno as the cam, attacking Mm-hmm. midfielder. Right Mm-hmm. wing पे it will be Rashford and left wing पे Garnacho. Garnacho, right? तो basically आप भी यही बोल रहे हो more or less, which basically every Manchester United fan is saying. Some people are saying that Amad Diallo is actually good enough in terms of form to actually start, but that's debatable. Again, midfield में हाँ, मतलब one can argue Onana, by the way, we didn't speak about him. Onana Mhm. और he's been to some good. extent उगाटे ने actually मतलब सेव किया था भाई कल मैच, नहीं तो वो भी चल जाते. I don't know, मतलब others in the panel, Lala, do you agree with what Parth said? No, I would play Hoyland, of course, as a striker, but I won't play Bruno as number 10. मैं Zirkzee को खिलाऊंगा क्योंकि I feel Zirkzee Interesting. के पास जो क्रिएटिविटी है एंड जो उसके पास थोड़ा बहुत विजन है वो ज्यादा अच्छा वहां कर सकता है. एंड मैं उगाटे और ब्रूनो का डबल पिवट खिलाना प्रेफर करूंगा. एंड राइट विंग पे अमाड डियालो एंड लेफ्ट पे गर्नाचो. रैशफोर्ड को अगर मैं अभी ओनर होता, मतलब मैं अब टाटा बाय बाय कर दिया होता. आई एम डन विद रैशफोर्ड, इवन दो आई लाइक दैट गाय. ही उसके पास कंसिस्टेंसी नाम की चीज नहीं है. एंड अगर यूनाइटेड के लिए खेलना, यू हैव टू बी लाइक 7 on 10, 8 on 10 एवरी वीकेंड, तो वो नहीं रह पाता है. अदर देन दैट, लिंडलॉफ बाहर जाएगा जब लेनी यूरो कम्स इन. एंड मैंने हमेशा से बोला है वो लीचा मार्टिनेज, इवन दो अर्जेंटीना के लिए वो सेंटर बैक खेलता है और काफी सही खेलता है, बट यहाँ पे आई फील लेफ्ट बैक पे ही वुड बी आइडियल इन माय ओपिनियन. एंड राइट बैक पे माजुराई लाया है, उसको वहां ही खिलाओ चुप करके. एंड आई फील लाइक विद अ गुड मैनेजर, जो मैंने अभी टीम बोली, आई फील दे माइट डू गुड. इंटरेस्टिंग. अगेन मतलब इफ यू थिंक अबाउट इट, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस है राइट राइट नाउ, टू बी फेयर टू देम एज वेल. लेकिन अगेन मतलब सिंपल चीज बोलता हूँ, माजराई को सब जगह खिला दिया सिवा राइट बैक. Correct me if I'm wrong. In this season, he has played everywhere. Mazraoui, सिवाय the नहीं खेला position है, where राइट बैक actually, भी खेला है, राइट बैक भी खेला मतलब है, लेफ्ट बैक literally भी खेला है. couple of games, he's not really, Yeah, couple of games, decent but both. you Primary. because Dalo cannot play as a left back. He just plays good as a right back. तो आप Exactly. मतलब हाँ. तो उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है. बट मजरोई ने डेब्यू अपना लेफ्ट बैक किया था, so you can play him as a left back, but he does not try it. अब ट्राई करता है तो नंबर 10 खिला रहा है यार. मतलब मुझे समझ नहीं लगती नंबर 10 खिलाने की क्या जरूरत पड़ी है यार. मुझे आपके लगता पास है आदित्य का कमेंट देखो. I don't know. यूनाइटेड के सारे प्लेयर्स ना एक पॉइंट के बाद वो नहीं कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज होता है, चल यार महीने के एंड पे तनख्वाह तो आ हाँ, रही है, बस बस बस. हाँ, तो Yes. वैसा क्या होगा. राइट नाउ इट्स द सेम Yes. सिचुएशन. मेरा ख्याल है यही चल रहा है भाई. अब बस तनख्वाह तो आ रही है ना हफ्ते बाद, महीने बाद, जिस टाइम भी, बस जहाँ खिलाते हो खिला लो, कोई मसला नहीं है. ये इस तरह चल रहा है भाई फिलहाल. सही बात है. Wow, interesting, very interesting this guys. Again guys, जो भी लोग देख रहे हैं, do not forget to hit that like button. भाई आप देख रहे हो बहुत ही बढ़िया पैनल. Of course, big up to the panel to come on short notice. Couple of them for sure, but everyone are tagged below. सब लोग first line the description है, काफी सारे channels है. तो भाई आप देख सकते हो, क्रिकेट लाला है, definitely कैल्सियो चर्चा है, absolutely यहाँ पर kick off conversation है, as well as the football showdown is there as well. चिंतन भाई इन द हाउस. चिंतन भाई लॉन्ग टाइम नो सी, क्या हाल है? ऑफ कोर्स आएंगे सेरिया टॉक्स पर भी आएंगे. फर्स्ट प्रीमियर लीग से शुरू किए मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन भाई थोड़ा बहुत कम बैंटर करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड का इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, बिकॉज वी हैव टू स्विच टू अदर टीम्स एज वेल. लेकिन चिंतन भाई, बिफोर वी गेट टू द एक्चुअल कन्वर्सेशन अबाउट आर्सेनल, लिवरपूल, चेल्सी, न्यूकासल एंड सेरिया, आपको क्या लगता है भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड का इज देयर अ सॉल्यूशन राइट नाउ? अरे यार, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन यार. अब मैं एक्चुअली अभी ट्विटर पे बहुत टाइम से देख रहा हूँ, मिलान और यूनाइटेड दोनों की कंडीशंस तो बहुत खराब है, क्वाइट सिमिलर पैरेलल चल रहा है. सो आई सॉ वन मीम विच सेड मिलान यूनाइटेड, यू नो यार, इट्स अ बिट ऑफ अ मेस, यू नो. थोड़ा ऐसा भी नाउ तो यू कांट इवन blame the manager. He has the players he wanted. He's got the transfer market. So I think he's running out of room to complain. The funny is his press conferences, yeah. The justification he gives, that is very hilarious. You know, hilarious भाई, hilarious. it is मतलब you know, एक ऐसा आदमी है जो मजबूर हो गया है अभी. He's just justifying himself. वो same trophy, I have won so many trophies. यार मतलब I think this is a very घिसा पिटा टॉपिक जो बोलते थे. एक टाइम पे वेंगर ये बोलता था तो पब्लिक उसको गाली देती थी. So I guess he's run out of topics to talk about. Justifications भी अभी गए. मजावरी नंबर 10 जैसे अभी बोल रहे थे.
I've seen him play and his आपको पता है justification, रात वाले ड्रॉ के बाद उसने क्या कहा है? रात वाले ड्रॉ के बाद आपने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है उसने क्या कहा? yeah, that उसने 3 draws Great. to point against Fenerbahce and वो Porto. तो मैं I think शुरू these से are किया था very- स्ट्रीम एग्जैक्टली मतलब आप पहले ही नहीं बाद मैच के बाद में भी उतने ही God, डिलीट हो तो हम as a तो यहाँ फिगर Manchester आउट करें क्या United, सूंघता है as a Man United manager, you should be ashamed of saying that thing. Yeah, why point at away at Porto and Fenerbahce and you are happy with it, yaar? Come on, where are the standards? What are the Yeah, standards it you are is. talking about, bhai? It is और very वो दो sad to ट्रॉफीज see में it is very sad to see because जब भी मैं यूनाइटेड देख रहा था मतलब I still remember Sir Alex used to like lash out at all these things, you know, and it is not to disrespect other clubs, but यार एक क्लब का एक set standard होना चाहिए when you don that Exactly. jersey. It is sad. पहले मजाक हो रहा था, of course सब लोग को banter में मजा आ रहा था मैन यूनाइटेड के सामने, लेकिन I think now it's come to that pity stage, यार. You don't want any big club, Yes. you don't want any big club to struggle so much. And ऐसा भी नहीं है जैसे अदर क्लब्स आउटसाइड ईपीएल में के पैसा नहीं है, they have everything is going, but there's something missing, you know. And I love hearing Roy Keane talk, you know, जब भी वो बोल रहा है कि the players don't understand what it is, तो यार बिठाना चालू कर दो, you know. He's justifying that मैं मजोरी को पहले से जानता हूँ, so that is not a justification to make him play number 10. I understand you're a manager, you can make that call, बस इस justification अभी run out. I think जो भी कुंवर बोला, this was the last straw when you're saying you're justifying a point against Porto and Fener, and that also you're playing Europa League, you're not even in the Champions League right now. So what stage you are at, if you're justifying that, that means कुछ बहुत खराब चल रहा है अंदर. मतलब एक अगेन और टेन चीज हाग भी है इन कि गाइस जब एवरीवनस जब फैन पिछले प्रीवियस मैनेजर्स में से जो सैकिंग के करीब होते थे ना, वो कुछ ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे और उसके बाद ऐसी ही लाइनअप्स खिलाते थे जैसे उसने लास्ट या नाइट तो खिलाई है. आप मतलब जो चिंतन ने बोला अबाउट सर एलेक्स जोसे मोरिन्यो मतलब दे यूज्ड टू प्ले विद द मीडिया, वो एक अलग चीज थी भाई. दिस इज टोटली डिफरेंट एब्सोल्युटली. मतलब आप यहाँ पर देख रहे हो हेड टू हेड में ऑब्वियसली वन विल आर्ग्यू दैट वेस्ट हैम हैव हैड अ कपल ऑफ गुड रिजल्ट्स रिसेंटली, तो डोंट बी सरप्राइज्ड. और रिमेंबर उनका भी लेस लोपेटेगी भाई इज रियली डूइंग बैड. वेस्ट हैम का यू नो रियली अप एंड डाउन, rather डाउन ही है फॉर्म, तो वन कैन से ऑलमोस्ट दैट यू नो इट इज अ साकिको जैसे चैट बोल रही थी for sure. It's not going to be easy. Predictions guys, before you go to the next match, of course the main ones, chat bhi boliye. Suchit, what are you going with? West Ham versus Manchester United. It's a Sunday 7:30 p.m. IST kickoff. For football's sake and for the entire fan base, I think West Ham needs to win. Let's No, just come go. on. Come on, Manchester United needs to win. Bhai, Ten Hag in. Come on, Ten Hag in, please. Oh, sorry. I mean, I'm proper brain fart. Yeah, Suchit, it's wake up, 7. bro. Wake up. Yeah, it's 7:30 in the morning. My bad. Yeah, I meant Erik Ten Hag and Manchester United to win, not West Ham. I don't पूरा know why I बिल्डअप said के West बाद सुचीत भाई पूरा मतलब यहाँ पर गुगली फेंक दिया सुचीत ने. बट गुड Ham. वन. Anyone actually genuinely believing that this can be a West Ham result? Pretty sure Manchester United should get the points. Jokes apart, I think it'll be a draw West more than You a know, I think it'll win be a for draw. anyone. Yeah, draw. Okay, yeah. interesting guys. I think Chat आप लोग बोलिए. our recent performances against West Ham away have not been good. We were thrashed, I think, last year. और this is not an easy ground to go and get a result. तो मेरा नहीं ख्याल, और with the form we are in, at best I think it would be a draw. मेरा ख्याल है, but yeah, I don't know. This is so unpredictable. I have stopped doing United previews, you know, because ऐसी टीम समझ नहीं लगती यार. कभी खेल जाते हैं एक हाफ. अब ब्रेंटफोर्ड वाला अगर आप सेकंड हाफ देखो ना जाके मैच दोबारा, तो अगर वैसा खेलती है यूनाइटेड तो यू नॉट आर्ग्यू के भाई यहाँ पे यूनाइटेड ही जीत. 2-1 जीत जाएगी. Definitely. 2-1 scrappy win, I would say. United. 2-1 scrappy win. चलो, I will take a win, bro. मतलब कहीं ना कहीं हमेशा होता है जब टेन हाग पर गले पर ये लटकी होती है ना, तब that's when basically United have got a result and I am backing them, bro. Again, मतलब technically if we, like Chelsea obviously यहाँ पर focus कर रहा हूँ, because if we lose, Newcastle is never easy, and United win, actually Premier League में it's not as bad as what it looks, and plus we are playing them, remember, as well very soon. लेकिन we are also playing Arsenal very soon, और Arsenal पर आ जाते हैं उनका गेम वीकेंड पर, Arsenal versus Liverpool, the big game of this weekend. Of course, again guys, जो भी लोग एल क्लासिको वेट करें, we'll be separately discussing that for sure. लेकिन
Chintan has a soft corner for Arsenal for people know. We have three Arsenal support. I think this is the first time on Almighty Blues जहाँ पर तीन Arsenal supporters on the panel. First of all, ये बोल देते हैं. Chintan, Arsenal का आपसे शुरू करते हैं because I think Champions League watcher, what they have been doing in Premier League, dark arts etc. Obviously, you have seen a lot of dark arts teams for sure. पता नहीं मतलब can we say that because getting those 1-0 victories the 1-0 to the Arsenal, you all remember, Yeah, right? of The course, the famous old song. Yes, the uh, famous. from late 90s and early 2000s. वो जो था ना मतलब is it that क्योंकि yes there are loads of injuries you have to give it या Arteta is basically कहीं ना कहीं not Ten Hag compare तो नहीं करेंगे, he's done far better, in fact he's a far better manager, लेकिन at this point in time could you say कि he has been also lucky in recent times in terms of getting those results because opposition are having chances, there's something missing in the last एक दो महीना नहीं एक महीना especially. Yeah, बोल सकते हैं, but eventually I feel a lot of injuries. Yeah, when you have if you remove Odegaard and Saka from the team, you remove two big players from any lineup, and I think any team would struggle, especially Odegaard. But if win is a win, to be honest, मैं जो EPL fan base को generally देखता हूँ, I saw the City Arsenal game. The slack Arteta is getting is unreal. I don't understand the slack he's getting. So what? Eventually, I think every team plays for a win. So doesn't matter how you win, you play with what you have. जो players अपने पास है, you'll play as per your convenience. And against the City, जो match था, it was I felt it was an absolute brilliant Arsenal performance. To be very honest, क्या हुआ यार? They were almost unlucky, kind of John Stones kind Yeah, of it was. did By his the way, if thing. you go to see, if you tactically break it down, it was near perfect for Agreed, 60 agreed. minutes. वो लोग कुछ पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे. क्या फायदा है वो बाहर से ऐसे इतने 200, 800, 10,000 passes किए? What is the point? Like I don't understand this whole modern concept of यार they didn't play good football. So what? Like not everyone is going to play one kind of football and win games. So I don't get the slack. I feel like I might be a little biased here also. To be honest, I'm a big Arteta fan. To be very honest, I think he's adapting very well. He understands that Arsenal जो और यही सेम you can just say यही सेम चीज पब्लिक वेंगर के लिए बोल रही थी that he plays only attacking football. He does not adapt. If his team is 1-0, I still remember the very famous North London derby where they were 2-0 up. It turned out to be 2-2 because Arsene Wenger played Arsenal how they're supposed to play. So now that Arteta is doing it, I don't know the slack he's getting. Yeah, I think the Champions League was a little lucky. You can say that, but I feel the number of fixtures जो है, I think Arsenal, if they get out unscathed from this entire thing, will be amazing. Yeah, and probably sometimes सब भूल जाएंगे कि कैसे जीते थे. Bournemouth was, of course, just a bad game. Just generally, it was just I think with the workload on the players which are there, I feel it is. I think I feel he's doing a great job, and I think lucky तो नहीं बोल सकते. ऐसी कई टीम है यार जो if you over the history तुम देखने जाओगे were lucky to be there. City के लिए भी बोल सकते हैं यार, they were lucky against Wolves. I feel so. I think he's doing a great job, and I feel if they adapt and how they're adapting, of course, Arne Slot has come out of nowhere, but I really think this might be one of the seasons where they might get a little closer there to City. You think so? मतलब मैं तो अभी भी I'm sticking to my guns और लिवरपूल पर भी बात करनी है. मतलब लाला knows that I've been kind of backing them. I don't know why, वो अलग बात है. When I was lucky enough to be live on TV also, मुझे question किया गया था चेल्सी का. I was talking about Liverpool. Like I don't know why I mentioned, but you have to give them credit. Liverpool as well. Arsenal good team. हम अनमोलदीप बोल रहे हैं even title contender, but Man City से points drop हो जाते तो ultimately title lost हो जाता है. अच्छा बोल रहे win is a win, but Arsenal is far superior team that than they have played in the last matches. Arteta has to bring the team back, and this style of play has an expiry, not sustainable to win any trophy, in my opinion. Matlab again, one can argue. Let's actually break it up because Arsenal Liverpool tactically, I don't know. Thoda bahut, I'll go back to history as well. I don't know, Suchit, being an Arsenal fan, do you have a personal favorite Arsenal Liverpool game? मैं last weekend बोला था Chelsea Liverpool is an underrated rivalry. Actually, Arsenal Liverpool, some good games have happened over the years. I don't know if you all remember. For all, मुझे तो personal favorite था, although in Arsenal player Harshavin, that has to be wow, what a game. For all, definitely. But if you talk about like recent times, in the 2018-19 season where Arsenal were absolutely like nowhere near Liverpool standards, and somehow in the dying minutes, Lacazette
falls on the ground, twists, turns, and then scores an equalizer against Liverpool at Emirates. I think that was like one of my favorite moments. But if we again go to lockdown, where we somehow beat Liverpool, where Reece Nelson scored, and it was such a bizarre win. Like because in that run we beat Liverpool, we beat City, and then we beat even Chelsea to win the. I mean, not in the exact run, but like we beat Liverpool in the Premier League, then we beat City in the FA Cup, and then we beat you guys as well. So that was an amazing run for me. Like so, yeah, these moments I really remember as like forever the things. बिल्कुल बिल्कुल दैट्स अ गुड कॉल फॉर श्योर लेकिन लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट लिवरपूल लाला भाई क्या यार आर्ने स्लॉट डूइंग पेप गार्डियोला थिंग्स इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब बिगिंग अप द अदर ऑपोजिशन मैनेजर्स एंड वो ऑल दैट मतलब मरेस्का और चेल्सी पर भी आएंगे लेकिन मतलब ये बंदा आई डोंट नो मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डच मैनेजर्स बीइंग अ डच सपोर्टर एज वेल अ लॉट ऑफ देम दिस गाय इज अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश वो पता नहीं क्या अगेन हम बोल रहे थे टेना क्या कहता है बंदा मतलब एक अजीब सा सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है मतलब कामनेस है मतलब विल दैट बी राइट टू से एंड दैट प्रोबब्ली इज हेल्पिंग द प्लेयर्स द प्लेयर लाइक ग्रावेनबर्ग को इसको कर दिया है लेकिन जो हम बात करते हैं आर्सेनल का मिडवीक में व्हाट अबाउट योर मिडवीक मतलब आपको लगा कि रोटेशन नहीं हुआ वापस से वाज अ लिटिल बिट ऑफ कंसर्न क्योंकि बिजी पीरियड है या यू आर लाइक गुड जस्ट 3 चेंजेस थे टू स्टार्टिंग 11 हाँ, I was a bit concerned कि he said that McAllister was fit तो no chance like McAllister नहीं खेलेगा and that makes sense as well. But मैं चाहता था कि जिस हिसाब से कर्टिस का गेम गया था चेल्सी के अगेंस्ट मैं चाहता था कि कर्टिस को चांस मिले एंड वो खेले उसको वो कंसिस्टेंसी मिले इवेंचुअली उसको वो चांस नहीं मिला एंड इट्स फाइन बट मिड वीक जो भी मैच था स्टार्टिंग के 15 मिनट वाज नॉट दैट कन्विंसिंग क्योंकि काफी हाई प्रेस कर रही थी लाइप्जिग की टीम तेज भागने वाले लौंडे हैं उनके पास मतलब इट वाज टफ फॉर लाइक फर्स्ट 15-20 मिनट बट उसके बाद क्लियरली दिख रहा था एक मैच में मतलब आई ऑब्जर्व मैंने कभी क्लॉप के टेन्योर में नहीं देखा होगा कि 4-2-4 3-5-2 मतलब डिफरेंट फॉर्मेशंस एक ही मैच में 3 फॉर्मेशंस देखने को मिल रही हैं ऐसी अडेप्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन मैंने कभी क्लॉप के टेन्योर में नहीं देखी होगी तो आई लव्ड इट वो वाला सिचुएशन बट अदर देन दैट हाँ यार ये बंदा कॉन्फिडेंस है इसके अंदर बट इसके जब भी ये बात करता है फील्स लाइक ही हैज दैट सेंस ऑफ कामनेस एंड उसको पता है लेवल हेडेड इंसान लगता है कि उसको पता है मेरे को इतना बोलना है बड़ा नाप तोल के बोल रहा है इतना बोलना है इससे ज्यादा नहीं बोलना और बीच में एक आधा जोक भी क्रैक करना है कि मीडिया मेरे साइड पे रहे तो मतलब काफी आई वुड से क्लेवर है काफी इस मामले में मतलब कहीं ना कहीं इट्स ही इज काइंड ऑफ रेजोनेटिंग जो लिवरपूल फैंस इन जनरल मैं जनरलाइज तो नहीं कर सकता जितना मैं बात करता हूँ उनके लिए बोल सकता हूँ जो लिवरपूल फैंस ट्राइंग टू प्ले इट सेफ येट अगेन कि भाई हम नहीं है वी आर लेट्स सी वी नॉट बीन टेस्टेड एटसेट्रा जो चल रहा था लास्ट वीकेंड तक बिफोर द चेल्सी गेम he is almost doing the same thing in my opinion which is kind of working in a good way I believe for Liverpool players but again the table doesn't lie at all आप देखो especially the goals conceded मतलब for me that kind of stands out like anything just 3 goals conceded guys आज के दिन में आज के युग में it's very difficult especially talking about a Liverpool team doing that अगर आप देखो तो fixtures भी yes you can argue that they had fairly easier fixtures compared to few other top teams शुरुआत में लेकिन now that they have played Chelsea and अगर इस weekend में they get a result against Arsenal all of a sudden you never know मतलब you are looking at least Premier League में focus करो तो you are looking at a couple of winnable games for sure तो it's looking scary for sure 100% लेकिन before we go to others I would stick to Lala for one more question quickly chat आप लोग भी बोलिए Luis Diaz Lala knows that I am a personal fan but so am I of Gakpo if for this game in particular अगर आपको चुनना है considering 2 games में शुरू नहीं किया है Diaz और Gakpo has actually performed really well अब clearly Gakpo has overtaken Diaz is that a thing no I remember हमारी सीजन स्टार्ट पे कॉन्वर्सेशन है I was like कि नहीं अगर we get a good offer let's just sell him but मैंने एक चीज देखी है लुइस डियाज अंडर आर्ने स्लॉट 1-on-1 सिचुएशंस में ही हैज इम्प्रूव्ड भाई बहुत गजब इम्प्रूवमेंट दिखाई है उसने इस डिसीजन मेकिंग काफी बढ़िया हो गई है तो अगेन आई वुड से लुइस डियाज को खिलाओ सलीबा नहीं है मतलब वो
आतंक मचा सकता है वो वाले एरिया में, मतलब नेक्स्ट लेवल, क्योंकि जो पेस एंड जो मतलब वो कहते हैं ना कि सडन बर्स्ट ऑफ पेस लाना, वो लुइस डियाज के पास है, गैक्पो के पास वो नहीं है. गैक्पो इज मोर ऑफ अ कट इनसाइड काइंड ऑफ अ क्रिएटिव काइंड ऑफ He is more like a forward who plays wide at times, almost तो ऐसा मैं लगता लुइस है. डियाज को ही प्रेफर करूंगा खिलाना. एंड जो आपने बोला ना कि खाली 3 गोल कंसीड किए हैं, मैंने हमेशा निधि भाई के चैनल पे, मैंने सिंधा मॉन्ग पे, हर जगह अपने पे भी यही बोला है कि चेल्सी के मैच में ना इन लास्ट 15 मिनट्स जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर था वो बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा, बट डिफेंसिव स्ट्रक्चर वाज ऑनेस्टली द बेस्ट. मतलब मेरे को वो देख के ऐसा बोला वाह यार, मतलब कितना अच्छा डिफेंड कर रहे हैं मतलब आप. कितना लिवरपूल, आई डोंट नो इफ पीपल अग्री, लेकिन आई थिंक लिवरपूल जो मीडिया हाउस में रहते हैं ना लोग, अगेन दे हैव बीन स्पॉइल्ड, क्योंकि यस्टर इयर्स अगेन अर्ली 90s 80s 70s एटसेट्रा दे वर लाइक नेक्स्ट लेवल फुटबॉल खेलते थे, आई बिलीव सो. अगेन वी हैव नॉट वॉच्ड दैट, लेकिन they were not very proud of that performance. I think you have to be, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टाइटल विनिंग काइंड ऑफ मेंटालिटी थी कि यार वी आर हैप्पी टू सिट बैक एंड हिट. I'm pretty sure यहाँ चिंतन you will probably back me यहाँ पर in terms of how you have to be strategic in certain games. और I think लिवरपूल अभी प्रूव कर रही है, and आर्सेनल वो कैसे टैकल करेगी, because आर्सेनल is supposed to be that team this season. तो it'll be interesting कैसे होगा ये गेम. नहीं, Yeah, it's a very interesting. I'm very, very happy to see how Arne Slot is doing his uh, जो people were expecting that gegen press जो Klopp ला रहा था, this guy's got a certain calmness. You don't see Liverpool just running helter skelter now. मतलब वो दिख रहा है उनका एक adaptive approach है. And Gravenberch को जो उसने convert किया है यार as outstanding, you know, that's properly on the coach. And this is what I think Ten Hag is lacking. एक उसे मोल्ड किया है. ग्रेवेनबैक हैज नेवर प्लेड दैट पोजीशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. उसको कन्वर्ट किया है. ही लाइक्स अ पिवट रोल. उसके फायरवुड में भी जो था, उसको 2-3 सीजन उसने उधर निकाले थे. ही लाइक्स समवन हु कैन प्ले दैट पिवट रोल, हु कैन बीट द प्रेस, पुश द बॉल आउटसाइड. इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग हाउ वेल ही, एंड यार जो उसके सामने वही खेलेंगे. एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई लिवरपूल फैंस आर आल्सो वेरी दे आर नॉट आल्सो रनिंग गंग हो के नहीं यार, बिकॉज आर्सेनल और सिटी के पास थोड़ा मोमेंटम है. ही इज अ न्यू मैनेजर. He's not gone through a rough patch as a manager yet, so वो कैसे adapt करेगा? So I understand, but this is definitely a very, very good sign how they're playing, how they're adapting. Chelsea Liverpool was very entertaining the game. So and again this is going to be against Arteta, जो Arteta कर रहा है. So let's see how it goes. This is going to be like a battle of chess जैसा होगा यार. And Saliba is going to be a huge miss, and Calafiori also got injured and walked off. So it's going to be a very, very shaky Arsenal defense. Let's talk about the Arsenal players now, because the big question is, of course, how will you approach this game? I don't know, मतलब Parth, if you have to go first in terms of कैसे expect कर रहे हो at home, and it is a 6-pointer, guys. आप 3 points, मतलब you have to go for 3 points क्योंकि already you have dropped points. What are you saying कि आप kind of go attacking? क्योंकि last weekend weren't you surprised, Parth, that उसने खेला basically Mikel Merino as well as basically you had Rice and Partey, if I'm not wrong, which was very surprising, Yeah, right? that was a very poor 11 that we put out. Matlab, if it was against a good, solid opponent, I mean, no disrespect to Bournemouth, but still, we can play attacking players in the 11, and especially with Vaneri, who has been showing signs of being a good player. Matlab, he was the only creative player we had when we missed Odegaard, and he didn't even get a minute, and he got some minutes matlab, later in the game when the game was done. So I think yeah, Arteta has been very pragmatic with the way he's approached these games. जहाँ पे he should have been someone जिसको risk लेना चाहिए था ऐसे games में, because they are winnable fixtures. But then again, अभी the way Arteta has been this season, I expect more of a defensive structure than an offensive one, even if it is against Liverpool at home. मतलब मेरा तो वैसे ही रहेगा, because at this moment in time with all the injury scares, consolidating and not conceding is more important than going all out and trying to win the game. वो बहुत it will be difficult, and that too against Pool. Suchit, what's your 11? My 11 would I'd definitely start Veneri. It'll be like a back four. See, I'm Wow. not really sure
what the situation is with Timber, to be very honest. If Timber was available, I would have been a lot more cooler, a lot more मतलब it calm. was a muscle injury, right? If I'm not wrong, the Yeah, muscle injury, I yeah. think it's far too He's risky. available. I Uh, think he's available for the no, weekend. no, But I I'll don't be think really Timber is surprised if he available starts, bro. because Muscle injuries, if you no, really because he's been pulled out even from the Netherlands squad as well. It correct, is going to, correct. yeah. So that's why I'm not really sure what exactly is the situation. So if we were supposed to see the back line, it'll be like Magalhaes and Ben White. With the right back, probably it should be who will be the right back? Zinchenko. Partey could play there. Partey could be Yeah. the right And back, and imagine Partey against Diaz slash Gattuso, bro. That'll be an interesting battle. I think that'll be fine. I think it'll be fine. I'm not saying it'll be horrible. I think it'll be fine. As a left back, I think I would still start Kivior over Miles Kelly because it's against Salah. It's not against like some random uh, Hmm. random right winger that Liverpool are playing. So I'd Of start course. Kivior, and in midfield I'd start Declan Rice, Veneri, and Marino, and Hmm. forward line Martinelli, Havertz, and Trossard. Saka. And actually Trossard on the left and Martinelli on the right. Oh, that's interesting. Why would you change Martinelli? Yeah. बड़ी इंटरेस्टिंग पता नहीं कोर आप अगर Hmm. न्यूट्रल बोलोगे मतलब आर्सेनल लिवरपूल कैसे अप्रोच करना चाहिए दोनों टीम्स को एंड मतलब ऑब्वियसली लिवरपूल आर फेवरेट्स डू यू एग्री विद दैट एंड मतलब putting in a youngster in as a starter in this game मतलब do you think is the right approach or इस game में probably he should play the midfield that he played in last game? Yeah. Yeah. मेरा ख्याल है बहुत एंटरटेनिंग मैच होने वाला है. नो बीइंग अ न्यूट्रल हियर, सीइंग आर्सेनल लिवरपूल नो आपको पता है राइवल्स और वो सब चल रहा है. टॉप ऑफ द टेबल, सीइंग देम टॉप ऑफ द टेबल ऑफ कोर्स हर्ट्स ऑफ कोर्स, बट या आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ 6 पॉइंटर जो भी यहाँ पे लेता है. बट आर्सेनल का वो ये इंजरी इश्यूज हैं. डिफेंसिव लाइन आई डोंट नो भाई, मुझे नहीं पता राइट बैक कौन होगा, सेंटर बैक कौन होगा. दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू से. आई थिंक फॉर इवन फॉर आर्सेनल फैन दे डोंट नो के who would be that right back ना. तो I think जिस तरह Timber is ये very key क्योंकि Timber can kind of play in both the full back positions. I think that's very हाँ very key टिम्बर factor. टिम्बर अगर फिट होता है तो फिर मैनेज हो सकता है. भाई बट मैच ये वाली फीलिंग हो रही है आदित्य ना फैंस को नहीं अकबर क्योंकि आपका भी याद है लूक शो आउट था फिर मलाशिया आउट था फिर आपने या लोन पर लाया था किसको मतलब तीनों रेगुलन हाँ रेगुलर तीनों रेगुलन तीनों आउट थे. आई थिंक या इट्स दैट हमने उसके लास्ट बाद सीजन भी अमराबाद खेला, लिंडलॉफ खेला, करेक्ट पता नहीं करेक्ट किस किस को लेफ्ट फिर बैक खिलाया फाइनली था. डालो और वो डालो अभी तक अटका हुआ है इमेजिन करिए या मतलब इट्स सच अ केस और ये चीज ना और फिर मजाक उसको में कर जिसकी रहे जगह हैं. लेके आए वो नंबर 10 खेल रहा है. मतलब जिसको लेफ्ट बैक खेलना चाहिए वो नंबर 10 खेल रहा है. मतलब यार हद हो चुकी है. मैं लेकिन वही बोल रहा हूँ क्योंकि आर्सेनल की बात हो रही है ना यहाँ पर इन माय ओपिनियन एंड आई बीन सेइंग इट फॉर लॉन्ग. आई थिंक पीपल जो चैट में माइट हैव हर्ड इट सो मेनी टाइम्स ये पक गए होंगे लेकिन आर्सेनल आई थॉट लास्ट सीजन वर अ लिटिल बिट लकी इन टर्म्स ऑफ इंजरीज अपार्ट फ्रॉम टिम्बर यू नो दैट वो आई डोंट थिंक मेनी पीपल कैन Yes, आर्ग्यू of course. जो टचवुड अभी हम लोग का चल रहा है यू नो अब टचवुड इनको क्रॉसिंग माय एहसास हो रहा है जो हमारे साथ लास्ट सीजन. हाँ एग्जैक्टली so many injuries. United also face so many injuries. अब मुझे ये नहीं पता कि साका और ओडिगार्ड की क्या सिचुएशन है. If both of them are going to miss the game, then they are going to be a big wins against Liverpool. Yeah, they're confirmed out. I think they're confirmed out. Odegaard हाँ. and Odegaard is so confirmed out. हाँ Odegaard to definitely confirmed out 100% in the by So Vivek having fun with it. By ऑडिगार्ड shout की out to B रिप्लेसमेंट नहीं है. Sarangi. ऑडिगार्ड की रिप्लेसमेंट फिलहाल आर्सेनल के पास नहीं है. मेरा नहीं ख्याल कि वो जो क्रिएटिविटी प्रोवाइड करता है ना वो आर्सेनल की टीम में और कोई कर सकता है इस वक्त I मिडफील्ड में still खासतौर believe पे. कि Trossard had one bad game in Europe वाला सीन था midweek में. Agreed. But Agreed. he's good on the left. He's good on the left. He's a brilliant finisher. Martinelli was really good. By the way, Martinelli looks like I think मैं सुचित का tweet भी देख रहा था. I agree with him. I thought it was like Martinelli वापस आ गया वाला सीन था. तो I don't think if I'm Arsenal, which I'm not have to say definitely. लेकिन You are Arsenal? Martinelli को left से I don't think you should move. मेरा two cents is you should keep Martinelli now that he's got his thing. And also the fact is क्योंकि Liverpool है, I know Trent defended really well against Sancho, but that's Sancho. And I'm pretty sure सैंचो का आपको पता लग गया होगा. सैंचो का आपको पता लग गया होगा. भाई मैंने तो ऑलरेडी बोला था कि हमारे पास ना विंगर स्टार्टर्स वाले नहीं है ज्यादा ऑफ द बेंच वाले हैं. दैट्स द रियली फैक्ट. सुरेंद्र क्या हाल है व्हाट्सअप. लेकिन आई डोंट नो आई थिंक मैंने सबको आयुष का नहीं लिया है. लाला आदित्य का जो कमेंट है ना, आदित्य का कमेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे ख्याल है स्लॉट्स गेम मैनेजिंग एबिलिटी इज अ थिंग दैट गोज अनअप्रिशिएटेड. ये मैं एब्सोल्युटली एग्री करूंगा. और मेरा ख्याल है कि जब मतलब लिवरपूल वर्सेस यूनाइटेड वाला जो मैच था उसमें हिज गेम मैनेजमेंट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, स्पॉट ऑन. जिस तरह से उसने पूरा गेम मैनेज किया है
he didn't give us a slot, मतलब कोई चांस ही नहीं था यूनाइटेड के पास उस मैच में. तो that is what thing that Ten Hag needs to learn. और ये बहुत अफसोस होता है कहते हुए कि भाई 2 साल टेन हैग को प्रीमियर लीग में हो गए हैं और स्लॉट जो है वो बाद में आके उससे अच्छी मैनेजमेंट कर रहा है. तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे टेन हैग. नहीं, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि आई थिंक ये जो चीज है ना प्रोसेस वाला, ये घंटा प्रोसेस होता है सीरीजली. ये अब हो गया प्रोसेस. 2 साल हो गए. एग्जैक्टली, वी हैव सीन इट ना. ऐसे रीसेंट इयर्स में हमने देखा जब क्लॉप और ग्वार्डियोला थे, कॉन्टे आकर ले लिया प्रीमियर लीग. जब इतने सारे मैनेजर्स थे, द ग्रेट्स ऑफ द ग्रेट्स इन द चैंपियंस लीग, यहाँ पर टुकल आकर ले लिया. अभी देख रहे हो आप व्हाट स्लॉट इज डूइंग इन लिवरपूल. भाई ये एंज वाला सीन ही है. अभी इतने सारे गेम्स हो गए. एंज जो था लास्ट सीजन, दैट वाज डिफरेंट. स्लॉट आप देखो ना, जैसे चेल्सी गेम में दिखा था लाला, दैट ही एक्चुअली हैड अ प्लान बी एंड दैट इज गुड टू सी. लेकिन इस गेम में बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग डार्क आर्ट्स, तो यूजेज होगा 100% आर्सेनल का, क्योंकि दे आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ प्लेयर्स एज वेल इन टर्म्स ऑफ इंजरीज. तो दैट विल बी वन टैक्टिक डिस्पाइट बीइंग वो मिडफील्ड प्लेयर्स करेंगे. मैं लिख के देता हूं, वो भी मैकलिस्टर के ऊपर होगा जो होगा. डेक्लन राइस और मैकलिस्टर का भाई वर्ल्ड वॉर 3. दिस इज द रीजन फॉर द फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा वरीड हूं कि केलियर गोलकीपर है, क्योंकि केलियर इज अमेजिंग, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है. बट जो एलिसन का बॉडी स्ट्रक्चर है, जो कमांड वो अपना गोल करता है ना, वो केलियर भी उतना नहीं कर पाएगा. एंड जो वो कॉर्नर्स पे वो मतलब करते हैं, वो आई ऑनेस्टली डोंट लाइक इट. एंड ऑब्वियसली वो विद इन द रूल्स है जो वो करते हैं. आई ऑनेस्टली डोंट लाइक इट. I think with Alisson at the back, your back four is more comfortable as well. अब अगर वो केलियर होगा या बैक फोर, मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा मसले मसाइल होंगे आपको. थोड़ा सा तो मसला होगा. बट अभी आई फील इतना केलियर भी खेल लिया है, लास्ट सीजन भी इतना खेला है फर्स्ट टीम में, कि बैकलाइन इज वे मोर कंफर्टेबल. बट अगेन जो मैं हर एक मैच में एक चीज बोलता हूँ कि जैसे चेल्सी के मैच में द वन थिंग आई लव्ड अबाउट स्लॉट वाज कि उसको गेम स्लो करनी थी. अंकित भाई होता हुआ लास्ट के 15-20 मिनट उसने गेम लिटरली स्लो कर दी जब उसने सब्स्टिट्यूट्स करे, प्लेयर लाए. बिल्कुल, दैट्स पार्ट ऑफ गेम मैनेजमेंट. एब्सोल्युटली. तो पता था कि अब इससे ज्यादा गोल नहीं आ पाएगा. ज्यादा वो करने का उसने गेम लिटरली स्लो कर डाली. एंड स्टार्टिंग के 15 मिनट में भी व्हेन चेल्सी वाज लिटरली डोमिनेटिंग द मिडफील्ड विद दैट 4 बॉक्स जहां पे पामर भी ड्रॉप कर रहा था, तो उसने गेम में उसको इशारा किया जोटा को कि यू हैव टू ड्रॉप डाउन, नंबर्स इंक्रीज करो मिडफील्ड में बॉल लेने के लिए. तो ये छोटी छोटी चीजें हम कभी कभी उतना ध्यान देते नहीं है. एंड आई फील लाइक यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. एंड आर्सेनल के मैच में आई वांट कि सबसे इंपॉर्टेंट गेम है मेरे हिसाब से ग्रावेनबर्ग के लिए. अगर उसका गेम अच्छा जाता है ना, तो आई फील हमारी पूरी टीम अच्छा कर जाती है. उसका गेम अच्छा जाना चाहिए. दैट इज द मेन प्लेयर. एंड मैकलिस्टर उसके साथ होगा, तो आई फील लाइक आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि गेम उसका अच्छा. Either of Partey or Rice probably will have a job to do वहां पर. That is quite clear. लेकिन वही है, क्योंकि ब्रेक ऑफ प्ले करने का मैकलिस्टर हैज अ वेरी गुड नैक, वो भी एक चीज है. तो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग बैटल 100%. लेकिन has been amazing this season. Amazing. उसका ओल्ड ट्रैफर्ड वाला गेम, I think it was one of the best this season. Gravenberch was amazing in that game as well. And midweek में न्यूनेस को भी Gravenberch arguably has been Premier League's best midfielder this season. According to the numbers. यार लाल एक सेकंड भाई, सब लोग भाई, when will you accept and admit that you are having on form the best midfielder in the Premier League and you are Premier League title, almost favorites? Come on लाला भाई, contenders नहीं, मैं तो बोलता हूँ at this point in time contender तो नहीं. लेकिन लास्ट सीजन भी सीजन स्टार्ट पे सबने contender है. मैं तो बोलता हूँ 100%. क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, अब देखो, you have not been tested. You have had 3 games in the last 6 games जहां पर आप बोल सकते हो you needed a plan B, plan C, और दोनों में I think you have kind of come up trumps. और in fact it's looking like आप third gear में ही basically जीत रहे हो such kind of games. So that is exactly what a title contender basically का definition in my opinion. भाई it's high time bro. लाला 3-4 हफ्ते 1 महीने पहले अलग चीज था, अभी अलग है. ये तो I will not say when, but anyway it's your call after all. That could be it for all we know. So let's go with the prediction, guys. By 55 minutes into stream, I hope there are 155 likes. लेकिन all the people are watching, everyone is subscribed to the panel as well. Links below. Calcio Charcha है, Kick It with Lala है, Football Showdown है, of course. Kick-off conversation है, right? Do not forget that for sure. लेकिन let's go around the table for a quick prediction. Arsenal versus Liverpool. Let's predict the goal scorers as well. Let's see. What are you saying, Chintan? Very difficult. I'm going with 1-1. I think it'll be a 1-1 draw.
Arsenal will want to not concede. And what you said was absolutely right. I think they should stick to the same midfield they stuck last season. Last game, sorry. So I feel their first job is going to be not to concede. And I think they will stick to the last game. I don't know why he could have risked Jorginho. He should have played him actually. Team defensive midfields, Bournemouth didn't sound good, didn't look good. They have a good record there. So I'm going with a Kai Havertz goal and a Mohamed Salah goal. So I think it'll be a 1-1 and Arsenal should भाई काय score. हावर्ट्स को डालना ही था गोल में Oh yeah, he's gotten the best out of Kai Havertz. You can see the best version of Kai Havertz after Leverkusen show. So I'm guessing 1-1 होगा शायद ये. But I like it when he plays Trossard behind as number 8. जब वो पीछे खेलता है, he's very effective. So I won't be surprised if he pushes Sterling up, Trossard behind. So one bad game यार, and I'm very surprised यार, ये आर्सेनल के साथ ही ऐसा होता है. One bad game and people just slander them like. Yeah, Trossard you should back 100%. He's a good player. Yeah, Trossard is clutch. I feel he's scored such important goals over 2 seasons, and yeah, amazing. I feel it turned out to be a blessing जो Mudryk नहीं आया and Trossard को buy किया. As of now, ऐसा लग तो रहा है. So, चलो उस पर चल जाते हैं भाई. सब लोग चैट में आपका कमेंट प्रेडिक्शन दीजिए क्विकली बिफोर यू गो टू द मुड्रिक एंड चेल्सी, बिकॉज वहां पर एक अलग नैरेटिव है व्हिच आई थिंक कहीं ना कहीं आई हैव टू काइंड ऑफ रेज द फ्लैग एंड चेंज दैट एंड दैट्स अ फैक्ट. लेकिन पता नहीं, लेट्स आस्क किक ऑफ कन्वर्सेशन गाइस. व्हाट आर यू सेइंग? लिवरपूल अवे टू आर्सेनल, कौन जीत रहा है और क्या स्कोर लाइन है? Tough to predict. I think 2-2. I'll go with 2-2. I think it will be a good game and 2-2. आर्सेनल का ऑफ कोर्स मेरा ख्याल है डिफेंसिवली स्ट्रगल करेगी आर्सेनल जितना भी कर लें, बिकॉज लिवरपूल अटैकिंग वाइज दे हैव बीन ब्रिलियंट दिस सीजन, स्कोरिंग गोल्स, और डिफेंसिवली अगर देखें तो लिवरपूल हैव बीन गुड. बट अवे मैच आर्सेनल एट होम, तो मेरा ख्याल है वो एक चीज है कि आर्सेनल स्कोर कर सकती है. तो आई गेस दिस वुड बी अ ड्रॉ, मे बी 1-1 2-1, इनमें से मेरा ख्याल है ड्रॉ. मतलब ऑब्वियसली हम जैसे गरीब इंसान तो ड्रॉ ही होप कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पेशली भाई 3 मैच, पता है कितने मैच हो गए ड्रॉ करते करते, क्योंकि चेल्सी मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम में भी बाकी है. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड कॉल, एब्सोल्युटली. लेकिन मैं न्यूट्रल्स का ले लियो भाई क्विकली. लेट्स मूव ऑन एंड वो एक टॉपिक मुझे छेड़ना है फॉर ऑल द पीपल भाई. यस, एक गेम ये कॉन्फ्रेंस लीग ही था, पनाथिनाइकोस ही था, आई गेट दैट टोटली. लेकिन पीपल से भाई पनाथिनाइकोस था, कॉन्फ्रेंस लीग था, इसमें क्या ही तो हाइप करना. कम ऑन, यू शुड हैव एनीवे वन दैट गेम एंड belted Panathinaikos. But Greece का atmosphere, people who actually watched the entire match would know. And Mudrik's performance was not a one-off. People have watched the cup games, बाकी matches में भी और जितना भी किया है. I think he's come off the bench and actually looked far better than what he was whole of last season. और even last season यहाँ पर yes, मैं एक जैसे सो कॉल्ड काई हैवर्ट्स को सपोर्ट करता था इनिशियली, यहाँ पर मुड्रिक को भी कर रहा था लास्ट सीजन. व्हाई? बिकॉज you see there are moments जहां पर he does extreme things. He does things like wow, and he does things like oh man, horrible. Well, that is the thing about Mudryk. So he is still very very raw. So people need to understand. But what a brilliant performance from him, I must say. I think he's got 2 assists and 1 goal. Of course, Joao Felix etc. लेकिन Newcastle will not be easy. Newcastle will not be easy. Newcastle में अब ये चीज है, मुड्रिक का क्यों मैं टॉपिक छेड़ रहा हूँ, क्योंकि you all remember last season में we were actually there. Lala will have a smile on his face because of we played Liverpool in the final of the Carabao Cup, right? लेकिन वहां पर हम पहुंचे कहीं ना कहीं मुड्रिक के लास्ट मिनट गोल से against Newcastle. So he has some memories जो लिवरपूल के गेम में भी था, क्योंकि he had a debut with Liverpool, but Arne Slot भी अटके हुए, Maresca did not use him. तो आई थिंक दिस टाइम वन कैन आर्ग्यू, क्योंकि सैंचो का जो परफॉर्मेंस आया था लास्ट वीकेंड अगर लिवरपूल, आई थॉट इट वाज far too predictable, if I have to say. Sancho was kind of always cutting in, एक ही चीज कर रहा था, और Trent probably did very well against him as well. लेकिन bit of both. शायद maybe, I know it's one game, जैसे पैनल बोल रही थी इतना जजमेंटल होना ठीक नहीं, लेकिन आई थिंक चेल्सी के पास इतना सारा टैलेंट ऑन द बेंच दैट आई थिंक we have to go for 6 pointers. हमें big call लेना पड़ेगा अभी. And I think Neto and Mudryk probably at this point in time, I would like to say again, Chad आप बोलिए, but Neto and Mudryk as wingers are probably better off in form versus a Sancho and Madueke अगर मैं बोलूँ तो. I think that is a no-brainer. But I don't know, मतलब न्यूकासल टाइट मतलब प्रेस होता है, आपको पता है, there will be tight spaces and all that. If I have to ask the panel, I don't know, Lala, if you have to go with this, मतलब do you think Chelsea not starting Nkunku
is still a big mystery, or people already saying कि Nkunku might leave, जो मुड्रिक का भी बोल रहे थे क्योंकि वो स्क्वाड में नहीं था. If you remember, याद होगा आपको लास्ट जो स्ट्रीम थी इसमें मैं बोला था कि why not Nkunku and why Jackson हुई हमारी बात हुई थी. Right. Even though Jackson is doing good, लिवरपूल के अगेंस्ट बहुत प्यारा खेला था मेरे हिसाब से. लाइक जैक्सन, काइसेडो एंड कोनाटे को याद आ गया था भाई, बहुत सारी चीजें. Noni Madueke was brilliant as well, I would say. Yeah. Again, I thought Robertson was quite poor in that game, but ठीक है, नोनी मडवेके को तो प्रेज करना पड़ेगा इसके. नहीं, रॉबर्टसन I would say no, रॉबर्टसन सबसे ज्यादा लैक एक ही चीज में कर रहा था, पेस. लाइक अब उसकी वो पेस नहीं रही जो उसकी वो होती थी, इवन दो इज नॉट दैट ओल्ड, बट क्लॉप ने उसको इतना भगाया है कि अब वो बेचारा बोलता है कि अब मेरे से ज्यादा भागा नहीं जाएगा. बट टैकलिंग एंड एवरीथिंग ही वाज ओके इन दैट, बट पेस में नोनी मैडवेके ने उसको खा गया था, लिटरली खा गया था. बट आई वुड से पता नहीं, मेरे हिसाब से एनकुंकू एंड थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लोगों को पता नहीं कभी अच्छा नहीं लगता है. जाओ फेलिक्स इज समवन आई ऑनेस्टली बिलीव इन हिम अ लॉट. आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील लाइक वो एक अच्छा फॉल्स नाइन काइंड ऑफ रोल प्ले कर सकता है मेरे हिसाब से. Okay. तो are you trying to say कि कहीं ना कहीं मतलब we play Nkunku and you have a point actually. आप देखो जब भी Nkunku और फेलिक्स although कप गेम्स में खेले इस सीजन together, I think उनका एक जुगलबंदी बोल सकते हैं, ट्यूनिंग, एक केमिस्ट्री है, because both are touch players kind of, if you know what I mean. और वो एक kind of one for the other वाला मामला रहता है clearly. But on the other hand, if you play both of them, you are saying that Jackson almost can come off the left hand side, जो anyway drift करता है. And because Sancho is not showing that 90 minutes wala player wala vibe yet, although he's been far better than what he was at Manchester United, I must put it there. On the other hand, आप मडवेके स्लैश नेटो है, तो आई थिंक यू हैव अ पॉइंट. बट अगेन पामर, Nkunku and Felix को आप फिट नहीं कर सकते हो. No, that's the point. हाँ, you could go this way that you could play basically an extra attacker and kind of have 4-1-4-1 system. लेकिन एंजो मरेस्का आपको पता ही है, मतलब like a Pep, I don't see him kind of changing on his philosophy of football. और वो 3-4-1 ही खेलेगा. हाँ, चेल्सी मैच जीत जाएगी. अरे बोलने की बात है भाई, मतलब for all you know things might change. Why change something which is not spoiled? So I don't think. एक सेकेंड चिंतन, हमने लॉस का सामना किया लास्ट प्रीमियर लीग गेम. But that was a very close game. I don't think what you had last season. First of all, Lavia and Caicedo pairing is amazing. मैं agree कर रहा हूँ. कुछ इतना बिगड़ा नहीं है कि इतना change करने की जरूरत. I only think what you said, I agree. I think Neto should start. I think he's amazing. Neto should start. Neto is doing amazing. I'm not a big Madueke fan as of now, but I think I think Neto and Nkunku, I'm a huge fan. Nkunku would be one of my first. I know Jackson खेलता है, अच्छा खेलता है, but Nkunku has to start, at least try तो करना चाहिए. But last again Liverpool, you were toe to toe, so it's nothing. I think you can probably say Chelsea is quite back, and I know Newcastle on paper seem very good, but they are not. They're low on confidence, so should be what? Yes, Newcastle hasn't been all that this season. Yeah, the Brighton controlled quite a bit, though Brighton did bench a lot of players. So I don't think, but what you're saying is right but I think it's working very well for Chelsea right now. Possession अच्छा कर रहे हैं, Lavia, Caicedo दोनों बॉल अच्छा बाहर निकाल रहे हैं. So I don't think you should change much. But one more thing is कि जो न्यूकासल है वो भी डिफेंसिवली उतनी साउंड इस सीजन हमें नजर नहीं आई. दे आर कंसीडिंग वेरी चीप गोल्स एज वेल. तो आपको चेल्सी को आई थिंक विद दिस अटैक दे शुड डेफिनेटली विन दिस वन. मेरा ख्याल है कि और कोई रिजल्ट होना नहीं चाहिए. चेल्सी होम पे है, पाल्मर इज इन वेरी गुड टच. उसके बाद अगर आप नेटो को खिलाते हो, आई थिंक नेटो शुड स्टार्ट दिस मैच डेफिनेटली. आई थिंक उसके बाद आपका मिडफील्ड में अच्छा काइसेडो और जो है उसका Lavia, yes, वो दोनों. Yeah, this is the next topic of discussion क्योंकि I thought Enzo Fernandez again just Conference League Panathinaikos had a very good game. और मुझे लगता है that horses for courses is what it should be. मेरा 2 cents is like I think there are games like Liverpool game. Lavia had a sensational game for 50 minutes, right? लेकिन वो fitness का issue है, तो just like Reece James, we cannot play him for full game. लेकिन on the other hand, there are games जहाँ पर like Newcastle, I know they'll be pressing, लेकिन there'll be tight spaces जो we have to make sure कि हम advantage ले. तो अगर आपके टीम में फेलिक्स या इंकुंकू भी नहीं है, पामर are these days blocked.
So in that case, मुझे लगता है एंजो फर्नांडिस को हम मिस किए, despite Lavia doing very well in that game. तो I think so-called big six या say top 7-8 teams के against, I still believe that there are games like Newcastle especially जहां पर Enzo Fernandez might be probably a no-brainer कि he should start. लेकिन people saying that Enzo Fernandez and Caicedo से ज़्यादा Caicedo and Lavia kind of suits better because Yeah. they kind of do defensive work a little bit more compared to Enzo, और वहां पर बाकी attackers have it in them. I don't know. Parth, if you have to pick for Chelsea, do you think it's a little bit harsh on Enzo considering that Lavia has hardly played भाई अभी इतना जल्दी क्यों जज कर रहे हैं? मतलब लास्ट सीजन एंजो wasn't that good, तो मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि एंजो इज एन लेकिन undisputed लास्ट सीजन ही starter. वाज And प्लेइंग विद हर्निया ना, हर्निया सर्जरी हाँ किया था वो समर था, में. अग्रीड, बट अगेन हम लोग उसको ऐसा बेसिस नहीं बना सकते ना. मतलब इफ लाविया इज द वन हु स्टेप्ड अप अगेंस्ट अ गेम ऑफ whose magnitude and the way we saw both of them play, Caicedo and Lavia, वो and it was not all that defensive. मतलब उनका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि they are just CDM वाले CDM. They know how to pass the ball. They are press resistant and they actually showed good signs. Matlab, Enzo will have to fight his way back into this team. He does not walk past straight. मतलब अगेन वी कैन अग्री टू डिसएग्री, फेयर. मुझे तो अभी भी लगता है मतलब रीस जेम्स के लिए भाई बहुत लोग बोल रहे थे इट्स प्रॉब्ली टाइम फॉर चेल्सी टू कैश इन एटसेट्रा, लेकिन अभी ऐसे भी ज्यादा कोई पे नहीं करेगा. और आई थिंक रीस जेम्स ऐसा बंदा है नो, रीस जेम्स एंजो को मैं सेम ब्रैकेट में क्यों डाल रहा हूँ, इवन लाविया फॉर दैट मैटर. मुझे लगता है द क्वालिटी एंड द पोटेंशियल इज वेरी मच देयर. मतलब ऐसे प्लेयर्स ना, और प्लस एज ब्रैकेट भी देखो भाई, आई थिंक दीज आर स्टिल वेरी यंग प्लेयर्स. I would genuinely believe that at some point, they will come really good. अब वही है, especially when we don't have many leaders in the park. I thought Enzo Fernandez का leadership skill is something which is needed in the park, because I think ये next level. और I'm again saying guys, ये as much as Chelsea media अभी सडन से बहुत हेट दे रही थी 1.5 सालों से, अभी से सडनली भाई पामर भगवान है, ये है Chelsea, why they are coming, they are the thing. I totally get it. I'm liking it. लेकिन इतना ज्यादा भी मत करो, क्योंकि भाई एक न्यूकासल से हारेगी, वापस से पैनिक बटन्स will be hit. तो I still believe in our experienced players. Again, मतलब at least 1 hour of Reece James, I'm expecting or hoping कि इस गेम में वापस से you would expect, and he's not had the best game against Newcastle as well as had good games against them. पता नहीं, लेकिन why in the title does it say Chelsea back? Because Chelsea is back supposedly, but does it mean कि back at the very top? No, back with the win भाई after Panathinaikos, just saying. But I don't know, predictions हो जाए guys. Newcastle United away at Stamford Bridge. Newcastle pretty much defense is a problem for Chelsea. Chintan, expecting Newcastle score करेगी कि नहीं? No, yeah, actually, they've been struggling quite a bit. Yeah, I feel it's. I saw the Brighton game. I was very disappointed. To Gordon see how बहुत मिस कर रहा है chances. Yeah, बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंस है, उसको नंबर 9 खिला रहे हैं. मतलब on paper, Joelinton, Tonali, the midfield is actually quite good on paper, to be very honest. Bruno and all three of them are quite good, but वो convert नहीं हो रहा है. They're running out of steam. I feel it's straightforward. I think Chelsea are pretty good right now. They press well. They have two midfielders who are pretty used to. They're good press resistant players, Lavia and Caicedo. So what you said is I agree, but I feel Lavia is probably one of the naturally more gifted midfielders compared to Enzo and Caicedo. I feel Lavia has a way higher ceiling for me. भाई लेकिन एक सबप्लॉट भी है ना गिमारेश और एंजो हाँ। फर्नांडिस का. मतलब आप देखो हाँ, वो भी है। अर्जेंटीना ब्राजील वाला सीन है इसमें. मतलब गिमारेश, and I'll be honest, I think he is one of the dirtiest players in the Premier League in terms of what I mean dirty, not dirty, he's a great player. Got it. ठीक है, But I don't see Newcastle scoring much. I feel it's a even if they might just go consolation goal होगा where Chelsea might just let the guard down, but I see a 2-0 or a 3-0 win for Chelsea. I hope Palmer scores. I love to see him celebrate. यार बहुत मजा आता है उसको celebrate करते देखते. I love the name Cold Palmer, and I love it how it's getting to other fan bases also. Like as in, I can see people are hey, he's not that great. एक game Liverpool में नहीं खेला था. I saw memes coming out. I love it when players are so unaffected by all these things and he still performs. So I'm going. I hope he scores. I hope Nkunku comes on and scores.
So I'm expecting a pretty straightforward game, to be very honest. Don't expect much from Newcastle. Fair enough. I believe Lala has to go as well as Suchit has left, but koi nahi, they'll be joining. Guys, again, do not forget to check out the panel's channel in the first line in the description. Definitely give them love as well as us. क्या बात है भाई, सब लोग likes की कमी लग रही है. I understand Manchester United fans कुछ नहीं है at this point in time, but Chelsea fans मेरे भाई आ जाइए सब लोग. Do not forget, and yes, we are discussing Serie A, and don't worry, La Liga El Clasico will be discussed in a separate video as well, which is in the works. Newcastle, लेकिन मैं I'll be, I don't know, मेरा गद्दा वाला फीलिंग आ रहा है इसमें. Obviously, I would want like anything Chelsea victory वापस in the Premier League and get a streak of victories. लेकिन मुझे लगता है Newcastle getting back-to-back losses in the Premier League जब उनके पास यूरोप नहीं है, I don't know. Can I see that realistically? I don't see that. Unfortunately, मुझे लग रहा है it be a draw. I don't know. Kick-off conversation. Would you agree, disagree? क्या बोलते हो? भाई चेल्सी विन यार, चेल्सी विन. आई थिंक शायद न्यूकासल स्कोर कर ले. आई थिंक कंसोलेशन इट वुड बी. क्योंकि हमारी डिफेंस में देखो ना, कॉलविल हैड अ बैड गेम अगेंस्ट लिवरपूल, ठीक है, और आई नो मिडवीक में खेला नहीं, रेस्ट दिया गया, एंड फोफाना इज प्रोबब्ली गोइंग टू बी बैक, कुकुरेया इज बैक इन प्रीमियर लीग, इट हेल्प्स. लेकिन अभी भी हमारा बैक फोर प्रॉपर, मतलब वो बैक थ्री हो जाते हैं. ब्रीज जेम्स स्लैश गुस्तो कौन खेलेगा? इफ्स एंड बट्स है. गुस्तो डिफेंसिवली हैज इश्यूज, अटैकिंग ब्रिलियंट साइनिंग लास्ट सीजन. लेकिन आई थिंक कुकुरेया इज प्रोबब्ली द बेस्ट डिफेंडर इन द बैक फोर, इफ यू रियली आस्क मी, सच में बोलूं तो. और काइसेडो और एंजो एंड हियर जो चिंतन बोल रहे थे और बाकी लोग बोल रहे थे that it probably makes sense to play, you know, Lavia and Caicedo because of the defense. लेकिन वही है ना, are we going to be a little bit too negative वहां पर? क्योंकि yes, second half में हम better किए, but the longer the game goes on against Newcastle kind of team, एक feeling आती है भाई, they are exact the counter team. काउंटर पे मारेंगे भाई, वो वाला फीलिंग आता है. आई डोंट नो व्हाई आई हैव दैट. गॉर्डन इजाक, लेकिन उनका स्ट्राइकिंग जो है ना उतना ज्यादा चल नहीं रहा. एज डिफेंसिवली भी वो उस तरह से जितना आप लास्ट सीजन देख रहे थे ना, या उससे प्रीवियस सीजन न्यूकासल को, वो वाली न्यूकासल आपको इस सीजन नजर नहीं आ रही. तो यहाँ पे ball is in Chelsea's court. I would say this is Chelsea's game to lose. यहाँ पे मेरा ज़ाती ख्याल ये है. So I guess and we are playing them twice. कप में भी उनके साथ है by the way. Following week. कप खतरनाक हो सकता है. कप खतरनाक हो सकता है. But Premier League में I guess Chelsea. अरे भाई. Arth agreed. मैं अकेला बोल रहा हूँ. Safe. चलो. नहीं. I think it will be Chelsea. चलो, I was trying to do a Liverpool fan, if you know what I mean, but कोई नहीं. Chelsea तो गाएंगे भाई. Come on Sunday where we will do the watch along as always. लेकिन यहाँ पर other games, I don't know if there are any other games where West Ham Man United का हमने बात कर लिया था. Then we discussed obviously the Arsenal, Liverpool and Chelsea Newcastle game. Pretty sure Man City का Southampton, if I'm not wrong. Southampton. कितने goals मारेंगे is a big question. Southampton home. Haaland is going to be my FPL captain, so yes, मैं. भाई Stones को खिलाएगा स्ट्राइकर. Stones को खिलाएगा स्ट्राइकर. If Erik Ten Hag was managing Man City, then John Stones would have been the striker. So it's okay. But कोई नहीं. Thank you football freak as well and others as well. Chelsea defense is shaky, मुजामिल बोल रहा है. I totally agree, but I don't know. Crystal Palace Tottenham guys, वो ये एक है London derby. That Crystal Palace are not doing well surprisingly. पता नहीं ऐसे को करना था एक ही गोल सीजन में, Chelsea का किससे करना था. So that could be a potential banana skin, especially क्योंकि यूरोपियन टाई था टॉटनम का, where I know they did well, जबरदस्त 1-0 विक्ट्री था. तो I think that is a potential surprise. आप लोग बोलिए any other surprise. मैं देखूं तो I'm not sure any of the major surprises दिख रहे इस weekend, right? I don't know. Aston Villa versus Bournemouth. Bournemouth basically are doing well. आप देखिए तो last coming from a good win against Arsenal, I think confidence उनका काफी sky high होगा. अच्छा मैच हो सकता है ये मैच. वो ये यूरोपियन टाइज है टॉटनम एस्टन विला काइंड ऑफ टीम, सो दे माइट काइंड ऑफ थोड़ा बहुत लेकिन आई हैव टू गिव इट टू एमरी यार. कांट रियली भाई. हम एंड करने वाले स्ट्रीम इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स. उससे पहले ऑब्वियसली यहाँ पर चिंतन जुड़े हैं, तो थोड़ा बहुत आई विल लाइक टू स्पीक अबाउट सेरी A एज वेल फॉर पीपल. यस, देयर आर बिग गेम्स वहां पर. आई डोंट नो चिंतन, मिलान क्या लगा भाई अपना मिडवीक में? आर यू कॉन्फिडेंट नाउ? All of a sudden, I thought we were lucky in the first 20 minutes. Honestly, मैं बोलूँ तो, सच में बोलूँ तो, touch your heart and tell. Yeah, of course. We were very lucky in the first 20 minutes, yaar, and you could see the nerves. It was a potential knockout match for Milan. Lose this and probably out of the running. So
very cautious approach. Red card was also unlucky. I feel it wasn't a red for me. Just unlucky. But I just was happy to see Liao perform well. I just saw some great. He had that freedom. I think European games are a little different. He's always double marked when he plays in the league. So it was good to see him perform so well, and there's so much pressure on him. He gets subbed off for Portugal. He plays like a king. So the manager has उसके ऊपर आई ग्लास है यार, थोड़ा उसके ऊपर अभी ज्यादा फोकस हो रहा है, बट नॉट वेरी कन्विंसिंग. बट एज आई सेड, अभी ऐसा सिचुएशन है भाई, अभी विन दे दो यार, थोड़ा 3-4 मैच ऐसे ही निकल जाए, मैनेजर को थोड़ा रन मिल जाए थोड़ा अच्छे रिजल्ट्स का, तो प्रॉब्ली कॉन्फिडेंस भी प्लेयर्स में आएगा. यू कैन सी इट यार अंकित, प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस भी बहुत कम है. थियो एंड लियाओ आर 2 बिग प्लेयर्स. यू सी दे बोथ आर रनिंग लो ऑन कॉन्फिडेंस. सो थोड़ा मोमेंटम मिलेगा तो अच्छा होगा यार. बट बाय द वे, Bologna will not be easy. No, Bologna Milan just got confirmation. Match has been postponed because of floods in Bologna, heavy rains. Yes, there was news. तो भाई ये तो postpone हो गया. तो welcome break भाई. Napoli next है, तो we can definitely prepare well. Unfortunately, because of that, Tijani Reinders and Theo were suspended for Bologna game, so now they will be suspended for the Napoli game. No. Yeah, Theo being suspended against Napoli is I was very happy with the rest, but when you have your इतना छोटे स्क्वाड में अगर ऐसे सस्पेंशन हो जाता है तो इट बिकम्स वेरी हार्ड. भाई यस, बाय द वे आई डोंट नो व्हाई यार, लास्ट वीकेंड उसको रेड कार्ड मिला था ऑब्वियसली रेंडर्स को, बट कोई नहीं. आई थिंक कौन है, यूनुस मूसा आएगा, आई एम असियूमिंग. Yeah, Loftus-Cheek आएगा यार, Loftus-Cheek आएगा, not Musa. So you are playing Loftus-Cheek and who else in midfield? Pulisic will play number 10. Chukwueze will play on the right then, I guess. Fofana and RLC खेलेंगे probably behind. Musa पे इतना confidence नहीं है उसको as of now, so I'm expecting that. Pulisic has been what to say, I'm running out of words for Pulisic. So confident, even for international, amazing confident. What a skillful player. And you see his age is only still young. Yeah, he started off at 17, so a new life for him. Amazing player. But वही है ना, touchwood अभी तक injuries have not played a big part in his Milan career. Having said that, I think Loftus-Cheek का जो बोला ना, I must say कि midweek में he had a bad performance. As much as I'm a Loftus-Cheek fan, for people who know me. लेकिन again interesting, big game obviously एक और है in the weekend in the Serie A as well. In Inter against Juve, right? Correct me if I'm wrong. Inter Juve, yes. Inter Juve, पता नहीं मतलब kick off conversation पूछते हैं, but Inter Milan जनरली एज अ टीम, मतलब जो हम बात करते हैं ना अबाउट लिवरपूल कि दिस सीजन दे आर लुकिंग लाइक द टीम जो दे कैन काइंड ऑफ स्कोर गोल्स एंड आप सिट बैक भी कर सकते हो. इंटर मिलान एक ब्लूप्रिंट है उस दैट काइंड ऑफ टीम का. आई जेन्युइनली बिलीव इट, डिस्पाइट हमने जीता था उनके साथ मिलान डावी, बट Juventus, I don't know if you got a chance to look at the midweek fixture जो उनका था against Stuttgart at home, they lost. बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस था, घटिया मतलब घटिया to the power of 10. I was shocked. Thiago Motta football, what happened bro all of a sudden? So Inter Juventus, it's all the way Inter looking like it, कहीं ना कहीं being in third gear. होना तो चाहिए, मेरा ख्याल है इंटर को जीत जाना चाहिए. अगर ऐसी परफॉर्मेंस के बाद यूवेंटस अगर वैसा खेलेगी तो फिर तो इंटर नहीं छोड़ेगी मेरा ख्याल है. और डिफेंसिवली तो हम मतलब ओवर द इयर्स नो इटालियन टीम्स हैव बीन नोन फॉर देयर डिफेंडिंग, बट यहाँ पे इंटर मिलान अगर देखें तो वो डिफेंसिवली तो साउंड थे ही, अब वो अटैकिंग वाइज भी काफी साउंड हो चुके हैं. तो मेरा ख्याल है मुश्किल गेम होगा यूवेंटस के लिए. इंटर मिलान शुड विन दिस वन. नहीं बिल्कुल. इनफैक्ट कमिंग बैक टू चिंतन मतलब यूवेंटस, they have been unbeaten the entire season in Serie A, right? If I'm not wrong. Yeah, they've not conceded also. हाँ, exactly, not conceded in fact. अभी basically इस result के बाद में, and ऐसा नहीं था कि again it was वो typical counter पे मार दिया opposition team ने coming to their stadium into, it wasn't that kind of a performance. It was a performance where at home मतलब उनको basically पेला गया almost. Stuttgart probably should have scored more arguably, right? So there's got to be some major changes यार. मतलब आपको लगता है कि यार आप बोलोगे नहीं, but in Serie A they've done fairly well. Inter Milan in town, tactically they have to change something, नहीं? First of all यार Juventus massive injury crisis, उनका मतलब पूरा lineup change करना पड़ा था. Their best center back Bremer got ligament. First of all, it's just very sad that throughout the season in every league
कितने ACL इंजरीज हुए हैं यार, इट्स वेरी सैड विद द नंबर ऑफ फिक्चर्स कमिंग इन. सो यूवेंटस मैसिव इंजरीज इशू, उनके बहुत इशू चल रहे हैं. बाय द टाइम व्हेन दे वर प्लेइंग वेल, उनका लाइप्जिग के सामने जो गेम था 2-0 डाउन, दे वन 3-2. Things were going well and then just started getting so many injuries. And they bought someone like Coop Miners, इतना पैसा डाल के अटलांटा से buy किया, and he's out injured. Nico Gonzalez. So basically, it's just that all the new buys, all the new players they've bought are probably out. Lot of changes. Yeah, but you know, you have to give it to Sebastian Hoeneß. Stuttgart is an amazing team. You know, सब लोग बहुत underestimate करते थे उनको. Generally, and after selling so many players in the market, they're still very good. And not just Juventus, I think that they should have beaten Real Madrid also. Outstanding game against Real Madrid. Correct. First 1 hour के लिए they were the better team. I agree Amazing. It was just very shocking that they were not up against Real Madrid. And of course, then it's Real. Stuttgart ran out of steam. We thought will happen against Juventus. Penalty भी miss किया Stuttgart ने 93rd minute पे उन्होंने winner मारा था. So Juventus का तो I understand lot of injuries issue है. But Inter, you know, Inter again a lot of injuries. But Inter, I've been saying it since the past 2 seasons now, that Inter is probably one of the best. I can't say player-wise they have the best players in the world, but tactically they are the best, one of the best teams in the world right now. If you ask me, top 3, top 4 clubs, they can. You saw the game against City at home. You saw the finals also. It was not one-sided. On the contrary, finals, I think Inter first half should have been up, and even against City at Etihad, Inter were, the way they were transitioning so smoothly, outstanding. It was a shock for someone else, but me seeing Inter and itne hare 6 derbies back to back hare, so I don't know how Inter plays. Amazing. So they are probably one of the best without the ball in the world right now. Any team without the ball, out of ball possession, they are amazing. But they have missing probably Hakan. And you know, actually 2-3 podcasts में कई जगह ने बोला था that Hakan is probably one of the best number 6 in the world other than Rodri. It is actually true if you go to see how well he's transitioned from an 8 to number 6. Like Gravenberch, people don't realize last season उसने बहुत अच्छा transition किया है. So मैंने तो लास्ट सीजन इतना मैं बोल के थक गया कि with all due respect, yes, Barella is getting the hype, but Barella is the number 8 really. The guy who's actually calling the shots is Hakan, and I totally agree with you. Amazing. And Hakan against City was मक्खन बोल सकते ना वो, और Zielinski and Barella क्या बॉल निकाला. It was Zielinski का एक था बॉक्स में, he dribbled past 3 players and in 2 minutes they were on the opposition. And Mkhitaryan missed an easy goal, like not an easy goal, but should have scored that one. So Inter are a very formidable team, yaar. With the injuries also, I think Simeone Inzaghi and जैसे Kuvar, like I think he's heavily linked with United. And trust me, वो मार के सिखाएगा players को. मतलब he's that kind of a manager. वो मार के सिखाएगा तुम लोग को कैसे खेलना है, because structurally and he's so amazing. And of course, one more, I think अभी काफी सारे लोग को पता है Bastoni is probably one of the best centre backs in the world. Yeah, amazing, yaar. Top 3 centre backs in the world right now. Amazing. And when it comes to back 3, there's no one better than वो जो ball को carry करता है बाहर. You know, a lot of Italian defenders. I think Di Marco is able to do what he's able to do because of Bastoni, because Bastoni literally covers 2 positions. Yeah, exactly. And जो अभी जो Califury public देख रही है, जो वो ball को इतना carry करता है, जो Italians usually are very comfortable with ball at their feet also as a centre backs. So, you know, you are probably seeing this new generation of Italian centre backs who are very comfortable with ball. There's another very good centre back at Napoli called Buongiorno. So Italians are very blessed. Bhi tha kafi. Yes, very beautiful, very amazing, gifted centre backs. So yeah, very difficult for Juventus to do well against Inter. Why all of us are going with Inter. Parth, what's your score prediction? Inter versus Juventus. I haven't watched Juventus play itna, but Inter को देखा है मैंने, and I difficult think to beat with all the injury concerns, यार 2-0. 2-0 चलो go with it. Yeah. Guys in the chat आप लोग भी बोलिए. I'm pretty sure we are agreeing with that. लेकिन guys again जो भी लोग देख रहे हैं, we have discussed literally I think 3-4 प्रीमियर लीग गेम्स बहुत ही चार्ट लिया डिटेल में हमने डिस्कस किया है. UEL, UECL as well as obviously यहाँ पर थोड़ा बहुत Serie A for people. La Liga watches especially. I know Barca, Real Madrid fans. El Clasico अलग से कर रहे हैं हम वीडियो that is already in the works and it will come first thing in the morning. तो जो भी लोग देख रहे हैं, do not forget to hit that like button. Also
subscribe to all the channels which are there linked in the description, including ours, but more importantly the panel. लेकिन अगेन हम लोग रहेंगे लाइव ऑल्सो ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स, बिकॉज वहां पर बवाल मच रहा है क्रिकेट, नॉट ग्रेट बवाल लेकिन गंदा वाला, जो हमें बात करना है पेंडिंग। कल लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं ऑलमाइटी स्पोर्ट्स में, उसका लिंक भी है नीचे इन डिस्क्रिप्शन फर्स्ट लाइन, बट संडे को यहाँ पर वॉच लॉन्ग है एंड प्रीटी श्योर बाकी चैनल्स भी यू कैन सी द कंटेंट। कैल्सियो चर्चा, किक विद लाला, किक ऑफ कन्वर्सेशन एब्सोल्युटली, एज वेल एज द फुटबॉल शोडाउन एंड ऑलमाइटी स्पोर्ट्स गाइस। अभी के लिए इतना ही है, बट यू नो व्हाट टू डू, ऑफ कोर्स Chelsea of the Chelsea, लेकिन and Forza Milan, but Arsenal versus Liverpool will be crazy, और West Ham Manchester United कहीं ना कहीं साकी को डाबी होगा कि नहीं, we are all Manchester United, are we? Come on man, Ten Hag in हो जाए भाई, Ten Hag in. चलो guys, see you soon, enjoy the El Clasico as well, bye. Thank you भाई for the invitation. Thank you for having us.